एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवजानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टेसिस। तो आज हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक क्विक रिवीजन किया था एंड आज हम नीट यूजी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट 32 इयर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर 2019 टू 1988. ओके, सो लेट्स बिगिन. So first question is, cells in G0 phase terminate the cell cycle. Second option is exit the cell cycle. Number 3 is enter the cell cycle, and number 4 is suspend the cell cycle. So correct answer will be exit the cell cycle. Okay, because जब कोई cell G0 में जाता है तो कोई सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है, रेगुलरली सेल डिवीजन नहीं होता है, तो वो इनएक्टिव स्टेज में वेट करता है. जब भी कोई कॉल आता है सेल से तभी वो सेल साइकिल में फिर से एंटर कर सकता है. तो इसलिए सेल्स इन G0 एग्जिट द सेल साइकिल. Okay, so number B, the correct answer will be B. Now next is the correct sequence of phases of cell cycle is G1S G2M. तो first option ही है ये. कल मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था. तो G1S then G2 and last is M, right? Next question is, crossing over takes place between which chromatid and in which stage of the cell cycle? So options are non-sister chromatid of non-homologous chromosome at zygote. No crossing over zygote में नहीं होता है. Non-sister chromatid of homologous chromosome at Pachytene stage of prophase 1. So this will be the correct answer, right? Because ये non-sister chromatids के अंदर होगा, homologous chromosomes होने के non-sister chromatid में होगा और ये Pachytene stage में ही crossing over होता है. ठीक है, rest of the जो options है वो है non-sister chromatid of homologous chromosome at zygote, ये भी नहीं होगा. Non-sister chromatid of non-homologous chromosome at Pachytene, तो ये भी नहीं होगा. So next question is the stage during which separation of paired homologous chromosome begins at. Okay, so कहाँ से ये separation शुरू होता है, कौन से stage से? तो ऑप्शंस आर पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस एंड zygote. सो पैकाइटिन में तो क्रॉसिंग ओवर होता है एंड व्हाट द क्वेश्चन इज द स्टेज ड्यूरिंग व्हिच द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम शुरू होता है. सो सेपरेशन शुरू होता है डिप्लोटीन में. ओके, क्योंकि डिप्लोटीन में वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन शुरू होता है, डायकाइनेसिस में फाइनली वो सेपरेट हो जाते हैं. Number 5 is, which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? Okay, so correct sequence क्या है? पहले condensation, nuclear membrane disassembly, arrangement at equator, centromere division, then segregation, then telophase. Okay, so I think this is the correct. Next is condensation, then crossing over, then nuclear membrane disassembly. No, so ये भी नहीं होगा. Condensation, arrangement and equator, ये भी नहीं होगा. और condensation, nuclear membrane disassembly, then crossing over, then segregation and finally telophase. So यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, that is condensation, then nuclear membrane disassembly, arrangement and equator में होगा, then centromeric division होगा and finally segregation होगा. Okay, क्योंकि माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं होगा. Next question is, anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defected in human cell, which of the following is expected to occur? Number 1, chromosome will be fragmented. Number 2, chromosome will not segregate. And number 3 is recombination of chromosome arms will occur. And number 4 is chromosome will not condense. So right answer will be chromosome will not segregate because it is anaphase promoting complex. ठीक है, so ये anaphase stage में mainly chromosome segregate होता है. तो ये प्रोटीन का मेन फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है एंड फाइनली दोनों तरफ क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होता है. तो राइट आंसर विल बी क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस on
S phase. Okay, so this question is repeated in a number of times. So you must know that DNA synthesis takes place on S phase. Next is when the cell has a stalled DNA replication for which checkpoint should be predominantly activated. So I have already told that two checkpoints are there, G1 to S and G2 to M. So already cells S में चला गया है, मतलब G1 to S क्रॉस हो गया है, अभी सेल डुप्लीकेट हो गया है, डीएनए सेल डुप्लीकेट नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है और एक डीएनए बन चुका है. अब कौन सा चेक पॉइंट आएगा, G2 to M. So check point should be predominantly activated is G2 to M, क्योंकि S के बाद ही वो G2 में जाएगा and then M में move करेगा. Okay, so next is match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic feature in column 2, right? So यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है ठीक से. So Pachytene pairing of homologous chromosome, Metaphase 1 terminalization of chiasmata है, dikinesis में crossing over. Okay, so let's start. So first देखो कि पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. तो ए हो गया 3, ठीक है. मेटाफेज 1 में होगा क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, सो A3B4, सो A3B4 ए में भी है, सी में भी है. नेक्स्ट इज डायकाइनेसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. नो, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा. ओके, सो यहाँ पे काइस्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है. सो ये होगा. एंड डी इज जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है. सो ए होता है 3, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, मेटाफेज 1 में अलाइनमेंट टू इक्वेटोरियल प्लेन, डायकाइनेसिस में terminalization of chiasmata, and zygote में pairing of homologous chromosome. So A3B4C2 and D1. So right option will be 9A, right? A3B4C2 and D1. Okay, coming to the next. Is spindle fiber attaches on centromere of the chromosome, kinetosome of the chromosome, telomere of chromosome, and kinetochore of chromosome. So right answer will be kinetochore. I have talked about it in the last video, जहाँ पे मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन करवाया है. वहाँ पे काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर के ऊपर, एंड वहाँ से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. तो राइट आंसर विल बी D, 10D. Okay, next question is which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell. Okay, chromosome movement synapses. Okay, synapses तो meiosis में होता है, mitosis में नहीं होता है. तो ये right answer will be 11B, right? So ये यहाँ पे common नहीं है mitosis में. Next is in meiosis crossing over is initiated at. meiosis में crossing over initiate कब होता है? Okay, so question is when the crossing over is initiated. Okay, so crossing over initiate हो जाता है पैकाइटिन में. Okay, so पैकाइटिन में ही होगा ये आंसर कि जहाँ पे crossing over शुरू होता है. तो the right answer will be 12C, right? Now is the question is 13, that is the arrange on the following events of meiosis in correct sequence. Okay, meiosis में so number 1 is crossing over, number 2 synapses, number 3 terminalization of chiasmata, and number 4 is disappearance of nucleolus. Okay, so the correct sequence will be first of all synapses होगा. Okay, then crossing over होगा, then terminalization of chiasmata होगा, and finally at the end of prophase 1 disappearance of the nucleolus होगा, right? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तब डिसोल्यूट हो जाएगा, फाइनली न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा, ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी 2, then 1, then 3, then 4. So right option is D, 13D. Okay, coming to question number 14. A somatic cell that has just completed S phase
of its cell cycle as compared to gamete of the same species has. Okay, so एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो जाता है, और गैमेट में क्या होता है, गैमेट में ऑब्वियसली हैप्लॉइड सेल्स होंगे. ओके, दैट मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. सो इसका आंसर क्या क्या होगा, नंबर वन, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, यस, बिकॉज क्या होगा कि हैप्लॉइड सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, और जो सोमैटिक सेल्स है उसमें डबल है. अब एस फेज में डबल भी हर 4 डबल हो गया है, मतलब 2C 4C हो गया है. सो अगर हम गैमेट के साथ कंपेयर करें, सो इसका नंबर, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बढ़ता नहीं है, क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस होता है, एंड ट्वाइस होगा, एंड डीएनए कंटेंट 4 टाइम्स होगा, राइट. सो गैमेट के हिसाब से जो सेल इस फेज में खत्म किया है उसका क्रोमोसोम नंबर डबल होगा एंड डीएनए कंटेंट 4 टाइम्स होगा. अगर ये गैमेट नहीं बोल के अगर नॉर्मल एक सोमैटिक सेल बोलते तो क्या होता, इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल कभी नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता, एंड जो डीएनए कंटेंट है वो 2 टाइम्स हो जाता, राइट. सो ये है, सो राइट आंसर विल बी 14A. ओके, फर्स्ट में ही हमें राइट आंसर मिल गया. 4 टाइम्स ऑफ द क्रोमोसोम नहीं होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ डीएनए नहीं होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ डीएनए नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस द नंबर ऑफ डीएनए ये भी नहीं होगा, ठीक है. सो करेक्ट आंसर विल बी 14A. Now select the correct option. Okay, 15. Select the correct option. So synapses aligns homologous chromosomes. कहाँ, नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये तो होगा भाई G2 फेज में. ओके, सो बी का होगा G2 फेज. एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, अब ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा आ रहा है. सो एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पैकाइटिन में होगा. Next, centromere do not separate but chromatids move towards opposite poles. Okay, so centromere do not separate but chromatids just wait, yes, chromatids move to the opposite pole. Okay, so ये होगा कहाँ पे, ये होगा एनाफेज 1 में. ओके, सो सेंट्रोमियर्स का डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन दो क्रोमोसोम्स अलग हो गए हैं, ठीक है, तो ये होगा 1 में. अब इसका करेक्ट सीक्वेंस फिर क्या होगा, ए का होगा साइनेप्सिस अलाइंस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये फर्स्ट मतलब पहले पहले होगा जाइगोटिन में. ओके, साइनेप्सिस हुआ मतलब पास में आया, अलाइनमेंट हुआ लिप्टोटिन में, उसके बाद साइनेप्सिस फॉर्म हुआ जाइगोटिन में. बी होगा 3 मतलब G2. ओके, नाउ A2B3, इसका दो ऑप्शन आ रहा है, D एंड B. ओके, नेक्स्ट C है 5. C क्या है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पैकाइटिन. ओके, सो ये C वाला ही होगा क्योंकि ये 5 में होता है. सो D A2B3C5 एंड D4 एनाफेज 1 में होता है, ठीक है. तो राइट ऑप्शन विल बी D. राइट आंसर इज बी D. A2, B3, C5 and D4. Okay. Next is 16. Question number 16. During which phases of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level? 4C मतलब DNA contain 4C level में है, and if the initial amount is denoted as 2C. Okay. Initially it is 2C. एंड देन ये 4C हो गया, मतलब डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है. G0 J1 नहीं, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है. G1 एंड S में तो होगा लेकिन G1 में नहीं होगा. ओनली इन G2 मीन्स S क्रॉस कर गया तो इसमें डीएनए कंटेंट 4C होगा. G2 एंड M में भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा. तो राइट आंसर विल बी ओनली G2. Okay, next question is in S phase of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell. Number 2, amount of DNA remains same in the each cell. No. Number 3, chromosome number is increased. No. Amount of DNA
is reduced to half in each cell. No, ये भी नहीं होगा. So S में क्या होता है, amount of DNA doubles in each cell. Number 18, next question is the question recombinase is required at which stage of meiosis? Obviously pachytene, because यहाँ पे crossing over होता है and enzyme recombinase काम करता है. Next is the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent. Axoneme, equatorial plate, kinetochore. No axoneme, no equatorial plate, no kinetochore. The answer will be bivalent because एक chromosomes में दो क्रोमैटिड्स बन चुके हैं एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आ गए हैं. तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइवेलेंट. Next, number 20 is a stage in cell division is shown in a figure and select the answer. So कौन सा stage है ये होगा C, okay, because telophase. साइटोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस में सेल्स डिवाइड होते हैं. तो यहाँ पे जस्ट कंस्ट्रिक्शन शुरू हुआ है, तो साइटोकाइनेसिस नहीं. Number 2 is telophase, जहाँ endoplasmic reticulum and nucleolus not reformed yet. ये भी नहीं होगा क्योंकि telophase में nucleolus बन चुका होता है. Yes, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है. So telophase C, number C option, nuclear envelope reforms, Golgi complex reforms. Yes, so right answer will be telophase. Let anaphase दिया है next option में, जहाँ पे क्रोमोसोम move away from the equatorial phase, Golgi complex no, यहाँ पे move away के बाद भी वो as a compact chromatin material बन चुका है. तो right answer will be C, 20C, that is telophase. Next question is during meiosis 1, chromosome starts pairing at zygote, pachytene, diplotin and leptotin. So leptotin में होता है during meiosis 1 chromosome start pairing. Oh sorry, because leptotin में homologous chromosomes आ जाते हैं पास, but यहाँ पे पेयरिंग मतलब साइनेप्सिस के बारे में पूछा है, राइट. यहाँ पे साइनेप्सिस के बारे में पूछा है, जहाँ पे साइनेप्सिस फॉर्मेशन शुरू हुआ है, तो ये होगा जाइगोटिन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस. During the metaphase stage of mitosis, spindle fiber attached to the chromosome with kinetochore, both centromere and kinetochore. Number C is centromere kinetochore areas adjoining centromere and centromere. So correct answer will be kinetochore. Okay. Now a stage of mitosis is shown in the diagram. So दिख रहा है ये figure में. Now which stage is it is a metaphase, and what is this characteristic? Okay, metaphase spindle fiber attached to the kinetochores, centromere split and chromatid separate. Okay, but यहाँ पे chromatid तो separate हुआ नहीं है, chromatid वहीं पे है as according to the figure. So the next option is chromosome move to the spindle equator, chromosome made up of two sister chromatid. Yes, ये figure में जो दिखा रहा है पहले वाले यहाँ पे ये अभी तक centromere division हुआ नहीं है, तो they move to the spindle equator and chromosome made up of two sister chromatid. And it is anaphase, no it is not anaphase, and late prophase, no it is not late phase, it's a late prophase. So the correct answer will be metaphase. Next is question number 24. During gamete formation, the enzyme recombinase participates during, तो क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में ही होता है, तो ये प्रोफेज 1 में ही काम करेगा, तो ये recombinase participate in prophase 1, that is 24C. Now the question 25 is the given figure is the representation of certain events at particular stage of a cell type of cell division. Okay, so which stage is it? Prophase 1 during meiosis. So prophase 1 during meiosis, prophase 2 during meiosis, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस नो, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस नहीं होगा. प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मेयोसिस भी नहीं होगा क्योंकि प्रोफेज 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है. प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मेयोसिस. सो लास्ट ऑप्शन इज बोथ प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. नो, the correct answer is prophase 1 during meiosis, right? Next is question number 26. Identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatid remain associated at their centromere. So ये होता है कहाँ पे?
Metaphase 1, Metaphase 2, Anaphase 1 और Anaphase 2. No, it is occurred in Metaphase 1, जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इसका एक एक क्रोमोसोम में जो दो दो क्रोमैटिड्स है जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, वो नहीं होता है सेपरेट, वो होता है मियोसिस 2 में. So this occurred in 26 years. The correct answer is uh, नॉट मेटाफेज, एनाफेज है, बिकॉज यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात की है. व्हाइल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सो सेपरेट फाइनली हो जाता है एनाफेज में. सो मेटाफेज 1 में वो इक्वेटर में आता है एंड फाइनली सेंट्रोमियर के भी डिवीजन होता है. सो एनाफेज 1 में वो ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है. तो करेक्ट आंसर विल बी एनाफेज 1, राइट. एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, right. So next question is select the correct option with respect to mitosis. Okay, chromatids separate but remain in the center of the cell in anaphase. Chromatids separate but remain in the center of the cell in anaphase. Number 2, chromatids start moving towards opposite pole in telophase. Number 3, Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. And number 4, chromosome move to the spindle equator, move to the spindle equator and get aligned along इक्वेटोरियल प्लेन इन मेटाफेज. सो ये माइटोसिस की बात हो रही है, ठीक है. सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिस्पेक्ट टू माइटोसिस. यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर में आ जाता है एंड गेट अलाइंड अलोंग विद द इक्वेटोरियल प्लेन इन मेटाफेज. ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज. नो, ये भी राइट रॉन्ग है क्योंकि तब तक वो चले जाते हैं. एंड क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल इन टेलोफेज. नो, टेलोफेज में ऑलरेडी आ जाते हैं. एंड क्रोमैटिड सेपरेट एंड रिमेन, chromatids separate but remain at the center of the cell in anaphase. So ये भी नहीं होता है क्योंकि anaphase में तो दोनों साइड चला जाएगा. So correct is option number D, right. Question number 28. A metaphase chromosomes are attached to the spindle fiber by their satellite सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर. सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. सो ये द आंसर इज काइनेटोकोर. नाउ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर. लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली प्रोफेज. ये प्रोफेज के शुरू के टाइम में ही डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. तो राइट आंसर विल बी अर्ली प्रोफेज. Next question is question number 30. Which stages of cell division do the following figures A and B represent? So see, so figure 1 में मेटाफेज, नो मेटाफेज तो ये है ही नहीं. नंबर 2 टेलोफेज, नहीं, टेलोफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है. लेट एनाफेज, ओके, सो ये लेट एनाफेज में ये पोल की तरफ आ गया है, सो एकदम पहुंच गया है. तो लेट एनाफेज एंड नंबर बी नंबर फिगर क्या है, प्रोफेज का, ठीक है. यहाँ पे ये प्रोफेज का फोटो है. तो राइट आंसर विल बी लेट एनाफेज एंड प्रोफेज. Next is question number 31. Synapses occurs. Synapses occurs between mRNA ribosome, spindle fiber and centromere, two homologous chromosomes. So this will be the correct answer. Two homologous chromosomes के बीच में ही होता है. So दो homologous chromosomes के बीच में. And number D is a male and a female gamete. ये भी नहीं होता है. So synapses occurs between two homologous chromosomes. 31 answer is will be C. Now next question is given below is a schematic breakup of the phases, stages of cell cycle. Which one of the following is the correct indication of the cell stage? Okay, so number 1 option is C, karyokinesis. So see the picture. So ये है interphase, ये है mitotic phase और specifically mitosis हो रहा है. यहाँ पे 4 phases है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये है क्या, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है. एंड सी रिप्रेजेंट साइटोकाइनेसिस. ओके, एंड ये जो तीन फेजेस, तो इसमें G1, S, G2 3 फेज हुआ. तो D रिप्रेजेंट S, सिंथेटिक फेज. सो फर्स्ट वन इज C, कैरियोकाइनेसिस. सी देखो कि यहाँ कैरियोकाइनेसिस नहीं हो सकता है, कैरियोकाइनेसिस तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन में हो चुका है. तो ये है होगा साइटोकाइनेसिस. सो ये गलत है. नंबर 2 D is synthetic phase. Yes, this is correct. D is S phase. Number C
is A cytokinesis, so A भी cytokinesis नहीं है, A karyokinesis है. And number B is metaphase, so ये third phase है, तो third phase is anaphase. So right answer will be D synthetic phase. Okay. Now coming to the question number 33, at what stage of the cell cycle are histone proteins synthesized in a eukaryotic cell? Now histone protein रहता है कहाँ? Chromosomes में DNA के साथ histone protein bind होके chromatid में रहता है. Okay, so during G2 phase of prophase, during S phase, क्योंकि S phase ही next और एक दूसरा chromatid बन रहा है, so chromatid formation के लिए DNA के साथ DNA तो replication में हो जाएगा, so histone protein को भी synthesize करना है, तभी chromatid formation होगा. So the right answer will be 33D during S phase, क्योंकि during entire prophase में भी नहीं, during telophase में भी नहीं, already ये histone protein synthesize होता है during S phase, not G2 phase of prophase. Okay, G2 में क्या होता है? cell division के लिए cell prepare होता है. Okay, so the question is 33 हो गया during S phase. Now question number 34, in the somatic cell cycle, in G1 phase, DNA contains is double the amount of DNA present in the original cell. No, G1 में synthesis नहीं होता है. Number 2, DNA replication takes place in S phase, so this is the correct answer. A short interphase is followed by a long mitotic phase, ये कहीं पे भी नहीं होता है. And number D is G2 phase follows mitotic phase, नहीं, G2 mitosis से पहले आता है. So right answer will be B. DNA replication takes place in S phase. Next question is, if you are provided with the root tips of onion in your class and asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? Okay, so हमें कौन सा काउंट, क्रोमोसोम काउंट हम कब कर सकते हैं? जब वो बहुत अच्छे से विजिबल हो, तो प्रोफेज में नहीं कर सकते. मेटाफेज में वो बहुत अच्छे से कंडेंस भी हो जाता है एंड इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज भी हो जाता है एक लाइन में. तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो एक लाइन में अलाइन दिखते हैं. ठीक है, सो कोई भी किसी भी टाइम में हम कोई भी क्रोमोसोमल स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा हमारा जो स्टेज होगा जिसमें हम देख सकते हैं अच्छे से क्रोमोसोम्स को, वो है मेटाफेज. सो द करेक्ट आंसर will be metaphase. 35(1)A. Next is 36. Okay, 35 हो गया. 36, which one of the following precedes reformation of a nuclear envelope during M phase of the cell cycle? Okay, decondensation from chromosome and reassembly of nuclear lamina, transcription of from chromosome and reassembly of nuclear lamina, formation of contractile ring and formation of phragmoplast. Number D is formation of contractile ring and transcription from chromosome. Okay, now see that M phase के बाद क्या होगा? M phase के बाद जब रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो गया ड्यूरिंग एम फेज, क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? सेल्स में दो साइटोप्लाज्म अलग होंगे. तो ये दो साइटोप्लाज्म दो टाइप में होता है. तो हम, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वहां पे सेल साइकिल का हमने रिवीजन किया है, उसमें ये प्रोसीजर अच्छे से समझाया हुआ है कि एनिमल सेल्स में कंस्ट्रिक्शन बाहर की तरफ से होता है जो डीप होते होते सेंटर की तरफ आता है, एंड प्लांट सेल में बीच से शुरू होता है जो लैटरल साइड में जाता है. सो बीच से जो शुरू होता है वो सेल वॉल फ्रैग्मोप्लास्ट से शुरू होता है. फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है? ER और गोल्गी और माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फॉर्मेशन किया था, इस सब का फ्रैगमेंट है जो बीच में बनाता है सेल प्लेट. एंड फाइनली ये दोनों साइड में सेल के दो लैटरल साइड में एक्सटेंड होता है एंड सेल वॉल का मिडिल लैमेला फॉर्म करता है. सो राइट आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किसको कहते हैं? एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही ट्यूब्यूल से फॉर्म किया हुआ, मतलब फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स से बना हुआ ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होता है, जो रिंग कंस्ट्रक्ट होके बीच की तरफ आता है. सो मेटाफेज के माइटोटिक डिवीजन के बाद ही लास्ट में न्यूक्लियर एनवेलप रेडी हो गया. उसके बाद में कौन सा स्टेज आएगा? साइटोकाइनेसिस. एंड दिस ऑप्शन इज रिलेटेड टू साइटोकाइनेसिस. सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट. Right. Next question is, mitotic spindle is mainly composed of which protein?
नाउ माइटोटिक, यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, एक्टोमाइसिन एंड मायोग्लोबिन। ओके, सो यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल मेनली फॉर्म होता है ट्यूब्यूलिन करके प्रोटीन है उससे। सो ट्यूब्यूलिन का यहाँ पे कहीं पे नाम नहीं है। अगेन मायोग्लोबिन एंड एक्टोमाइसिन ये दोनों ही मसल सेल्स में होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइबर्स। ओके, सो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन भी थोड़ा बहुत यहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो द आंसर विल बी बिटवीन एक्टिन और मायोसिन, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है क्योंकि इसमें ट्यूब्यूलिन का ऑप्शन दिया गया नहीं है, लेकिन एक्टिन एंड मायोसिन ये दोनों ही क्लोजेस्ट आंसर है। ओके, next is 38 best material of for the study of mitosis in laboratory. Okay, anther, root tip, leaf tip and ovary. Okay, so apical मेरिस्टेम of the root tip, रूट के जो एकदम टिप होता है उसमें जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है। ओके, सो ग्रोथ मीन्स वहां पे माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। तो कोई भी स्टडी अगर हम रूट टिप को लेके करते हैं तो वहां पे बहुत सारे सेल्स ग्रो में सेल डिवीजन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस चल रहा होगा। सो हम उससे माइटोटिक स्टडी कर सकते हैं। सो अमंग द अदर्स रूट टिप में ही सेल माइटोसिस सेल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे माइटोसिस होता है। सो रूट टिप विल बी द करेक्ट आंसर। Next is spindle fiber unite with which structure of chromosome? So again that question, so question is kinetochore, number C. Next, in which stage of cell cycle DNA replication occur? S phase. Microtubule is involved in muscle construction, membrane architecture, cell division and DNA recognition. So microtubule specifically tubulin से फॉर्म होता है एंड ये लगता है सेल डिवीजन में कब? जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, right? So this is the correct answer, is a cell division. Now how many mitotic division are needed for a single cell to make 128 cell? So you just calculate कि mitotic cells में क्या होता है, एक सेल से दो सेल रेडी होता है। So this is first mitotic division. 2 से 4 सेल होगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, 4 से 8 होगा ये थर्ड माइटोटिक डिवीजन, 8 से 16 होगा फोर्थ माइटोटिक डिवीजन, 16 से 32 होगा फिफ्थ माइटोटिक डिवीजन, 32 से 64 होगा सिक्स्थ माइटोटिक डिवीजन एंड 64 से 128 होगा सो 7. सो यू कैन कैलकुलेट, बट ऑल द अदर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिवीजन नंबर दिया हुआ है। सो इसमें तो होगा ही नहीं। सो सबसे लोएस्ट इज 7. सो राइट आंसर विल बी 7. यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट। Okay, next is during cell division in apical meristem, the nuclear membrane appears in telophase, cytokinesis, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन appears. ओके, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, मेटाफेज एंड एनाफेज। सो इट इज ऑब्वियस टेलोफेज, टेलोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आता है। नेक्स्ट इज व्हेन पेरेंटल एंड पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम change their material with each other in cell division, this event is called what? Crossing over. What? मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्टनर आता है फादर से एंड एक आता है मदर से। सो ये यहाँ जो पैटर्नल क्रोमोसोम बोला है ये फादर वाला क्रोमोसोम एंड मैटरनल मतलब मदर वाला क्रोमोसोम है। सो इसमें जो क्रोमोसोम का पोर्शन एक्सचेंज हो रहा है, सो ये इवेंट का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? एस फेज अगेन। सो एस फेज वाला क्वेश्चन एंड काइनेटोकोर वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉमन फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट, कॉल्चिसिन इज अ इनहिबिटरी केमिकल। सो कॉल्चिसिन क्या है? ये एक अल्कोहल डेरिवेटिव है। ये क्या करता है? ये एक्चुअली साइटोजेनेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च में और स्टडीज में हेल्प करता है। ये सेल्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने नहीं देता है। दैट्स व्हाई सेल डिवाइड नहीं होगा, क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे। सो इट्स प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस। सो सेल यहाँ पे सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होता है। So the options are stops the functioning of centriole, number 2 prevents attaching the centromere and raise
Number 3 prevents the cell spindle formation in mitosis, and number 4 is prevent the formation of epithelial plates. So right answer will be prevent the spindle formation of mitosis, right? Next question is, in somatic cell cycle, DNA synthesis takes place again in S phase. Which of the following represents the best stage to view the shape, size and number of chromosome? I have already explained, it is metaphase, always metaphase, जहाँ पे shape भी अच्छा होता है, शेज इसका साइज भी अच्छा होता है, एंड नंबर भी हम लोग अच्छे से काउंट कर सकते हैं. सो आंसर विल बी मेटाफेज. 49 which statement best explain the evolutionary advantage of meiosis? Meiosis is necessary for sexual reproduction. Number 2, genetic recombination are possible from generation to generation. Number 3, meiosis alternates with mitosis from generation to generation. Number 4, the same genetic system is passed on from generation to generation. So, नेक्स्ट मियोसिस में जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. सो ये दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आप लोग मेरा वीडियो जहाँ पे मैंने रिवाइज किया करवाया ये चैप्टर वो जरूर देख ले, क्योंकि वहाँ पे ये सारी डिटेल्स मैंने दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट इज number 50. Meiosis 2 performs separation of sex chromosome, synthesis of DNA and centromere, no, separation of homologous chromosome. Number 4, separation of chromatid. So right answer will be separation of chromatid, क्योंकि separation of homologous chromosome meiosis 1 में होता है, and finally chromatid का separation होता है meiosis 2 में. Number 51. Number of chromatids at metaphase is 2 each in mitosis and meiosis, 2 in mitosis, 1 in meiosis, 2 in mitosis and 4 in meiosis, 1 in mitosis and 2 in meiosis. Okay. So number of chromatid हमेशा 2 ही होता है. कोई भी क्रोमोसोम डुप्लीकेट ही होगा हमेशा, तो वो एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड ही बनाता है. So whether it is meiosis or mitosis, number of chromatids will always 2, and बिफोर एनाफेज. एनाफेज के बाद क्रोमेटिड अलग हो जाता है, फाइनली उसको हम क्रोमेटिड नहीं बोलते, तब उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन possessing. Okay. Mitotic anaphase differs from metaphase. So anaphase और इसमें क्या difference है? Same number of chromosome and same number of chromatids. No. Metaphase और anaphase में same number of chromatids नहीं होता. Half number of chromosome and half number of chromatids ये भी नहीं होगा. Half number of chromosome and same number of chromatid ये भी नहीं होगा. Same number of chromosome and half number of chromatid ये होगा, क्योंकि ऑलरेडी एनाफेज में वो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स आधा हो चुका होता है, क्योंकि मेटाफेज में वो डबल क्रोमेटिड्स है, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ एनाफेज वो हाफ हो चुका होता है. तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड. Number 53 is, in meiosis the daughter cell differ from parent cell as well as the amongst themselves due to protein. Now after meiosis 4 daughter cells रेडी होते हैं. ठीक है. सो वो भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है. वाई? क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है एंड क्रॉसिंग ओवर होता है. और सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से, नंबर सी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर की वजह से, एंड नंबर 4 सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से. सो ऑल दिस 3 फैक्टर्स, सेग्रीगेशन, independent assortment and crossing over, all these 3 factors are working there. Okay. क्योंकि 4 जो cells रेडी होंगे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बहुत रैंडम है, कहीं पे भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है. फिर एक एक गैमेट में कैसे सेग्रीगेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कौन से गैमेट में कौन सा क्रोमेटिड आएगा, क्रोमोसोम आएगा, वो भी वो भी रैंडम है. सो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो ऑल द 3 फैक्टर आर एक्टिंग. सो द करेक्ट आंसर विल बी 53A. Now next question is, meiosis 1 is reductional division, while meiosis 2 is equational division. Okay, due to pairing of homologous chromosome, crossing over, separation of chromatids and disjunction of homologous chromosome. So यहाँ पे why they are different?
मियोसिस वन में रिडक्शनल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम्स ही अलग हो जाते हैं। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एंड आफ्टर द एंड ऑफ इन मियोसिस वन एक एक सेट ही एक एक सेल्स को मिलता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। बट मियोसिस टू में क्या होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस, यहाँ पे क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। सो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। सो वन मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन है, बट मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन इसलिए है, यहाँ पे बस मियोसिस टू के बारे में ही पूछा है, ठीक है। सो मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है, right? So this is all about the 32 years question of NEET. Okay, so I think this will be very much helpful for you all. So please watch my video where I am just revise that whole chapter plus 11 chapter cell cycle and cell division. I think if आप लोग अगर वो वीडियो देख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज्यादा आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा एंड आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। So that's all for today, and hope to see you in my next video. Till then, bye bye.